ओके, चले जी, मैंने आपके लिए, मैं जो है ना एग्जांपल आपको देता हूँ बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक वाली, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। लेट मी नॉट यूज माय ओन एग्जांपल। उन्होंने मैथ्स की एग्जांपल दी है, मैंने तो आपको कलर ऑफ स्किन की एग्जांपल दे दी है ना। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल दैट द टेक्स्ट बुक इज यूजिंग। सो दिस इज द ग्राफ दैट योर टेक्स्ट बुक हैज। इन्होंने तीनों चीजें इकट्ठी एक्सप्लेन की हुई हैं। So I want you to look at this graph. Just look at the first two graphs. बाकी नीचे वाले मैं आपको जो थर्ड और फोर्थ है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने जो आप, या बाय द वे दिस इज ऑन पेज नंबर 404 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज 404। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने जो बच्चों एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है बॉडी। ओके, कैन एवरीबॉडी हियर मी? Yes, sir. ओके, चले जी। आपकी टेक्स्ट बुक ने जो एग्जांपल दी हुई है वो बॉडी मास की दी हुई है, यानी कि बॉडी मास इज अ ट्रेट जो कि इट्स अ नॉर्मल ट्रेट जिसके अगेंस्ट, यानी कि जो एक्सट्रीम्स हैं वो लो बॉडी वेट है और हाई बॉडी वेट है, लेकिन जो बीच वाली रेंज है वो नॉर्मल बॉडी मास है। अब उन्होंने यहाँ पे आपको देखें फर्स्ट डायग्राम में एरोज दिखाए हुए हैं कि एक किसी भी एनवायरनमेंट में एक नॉर्मल अगर सिचुएशन है तो लिखा हुआ है सिलेक्शन अगेंस्ट वेरी स्मॉल एनिमल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन सिलेक्शन अगेंस्ट वेरी लार्ज एनिमल्स। क्या मतलब, यानी कि ये जो स्मॉल एनिमल्स हैं और लार्ज एनिमल्स हैं दे आर नॉट सूटेड टू दिस एनवायरनमेंट, which means that they are not able to survive and therefore they are not able to reproduce। उसकी कोई भी वजह हो सकती है। असल में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिपेंड कर, इसकी मैंने आपको बताया था कि केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है। देयर कैन बी एनी रीजन फॉर ऑर्गेनिजम्स विद हायर बॉडी मास और लोअर बॉडी मास कि वो बेटर अडेप्टेड नहीं है टू द एनवायरनमेंट। ओके, इसीलिए आप देखें उसने एरोज ड्रॉ किए हैं, ये वाला और ये वाला, विच मीन्स कि जो फाइनल ग्राफ होगा वो ये होगा, यानी कि जो एवरेज बॉडी मास है इस वाले का, इस पॉइंट वाले का, उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर बेस्ट अडेप्टेड, इसलिए उनका नंबर सबसे ज्यादा है। दिस आइडिया is known as stabilizing selection, which means, let me read the definition again, now it should make sense. If organisms are well adapted to the environment and the environment does not change, natural selection acts against the new या extreme phenotypes, और इस केस में extreme जो है वो एवरेज से की दोनों साइड्स की एक्सट्रीम्स हैं, एक्ट इन फेवर ऑफ द एवरेज। लेट मी फिनिश द अदर टू इंशाल्लाह, देन टुगेदर दे विल मेक मोर सेंस। नीचे देखें उन्होंने एक स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। If a characteristic in a population such as body mass shows wide variation, selection pressures often act against the two extremes। कौन कौन सी दो एक्सट्रीम्स हैं इस केस में? हायर बॉडी मास और लोअर बॉडी मास। ठीक है, अच्छा जी। Very small or very large individuals are less likely to survive and reproduce than those whose size lies nearer the center of the range. This results in a population with a narrower range of body size, that is this thing, इसको हम कह रहे हैं stabilizing selection। Now let me quickly give you another example। ये देखिए जो C वाला ग्राफ है, इसका ग्राफ थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। क्या मतलब, in this case the selection is against very small animals। क्या मतलब कि the small animals are now not better adapted to the environment, therefore they will die, and the ones that have higher body mass are more likely to survive and reproduce। और उसकी वजह कोई भी environmental factor हो सकता है। ठीक है, इस तरह की सिलेक्शन को हम कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। सो इफ आई वर टू डिफाइन डायरेक्शनल सिलेक्शन इट विल बी एज फॉलोज। इट इज ऊपर में मेरे ख्याल से जहां पे हमारे दो, अच्छा चलें इसी के आगे मैं डिफाइन कर देता हूँ। डायरेक्शनल सिलेक्शन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, अ टाइप ऑफ सिलेक्शन इन विच टाइप type of selection in which the most common varieties of an organism
Most common varieties of an organism are selected against, resulting in a change in the features of a population. Resulting in a change in features of a population. ठीक है, यानी कि एक एक्सट्रीम, यानी कि ओरिजिनली जो इसका ग्राफ होना चाहिए था वो कुछ इस तरह होना चाहिए था, लेकिन अब एनवायरनमेंट जो है वो फेवर नहीं कर रही उन ऑर्गेनिजम्स को जिनका बॉडी मास छोटा है, एंड देयरफॉर द नेचर हैज कोट एंड कोट सेलेक्टेड द ones that have higher body mass. तो हम कहते हैं कि this is a selection pressure, a type of selection pressure जिसमें एक डायरेक्शन पे सिलेक्शन प्रेशर रख रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉडी मास. ठीक है, अच्छा थर्ड देखें जरा टाइप, इसको हम कहते हैं डिसरप्टिव. I want you to look at this graph and tell me what is disruptive selection. वो कह रहा है selection against animals of middle size. क्या मतलब है इसका? Rabia and Ariha, this question is specifically for you. Zainab, I don't know if all of this is making sense to you or not. But Rabia and Ariha, क्या ख्याल है? Looking at the diagram, how do you think you will explain disruptive selection? सर आपके पास दो ग्राफ बन जाते हैं. नहीं, वो तो दो ग्राफ तो बन जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन किन ऑर्गेनिजम्स की हो रही है, ऑफ व्हाट बॉडी मास, द एवरेज बॉडी मास और द सर जो स्मॉल और लार्ज होंगे उनकी सिलेक्शन होगी. एग्जैक्टली. सो नेचुरल सिलेक्शन दैट फेवर्स सर्वाइवल, लिख ले जरा. डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन की डेफिनेशन है, इट्स अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन that favors survival of individuals survival of individuals at two different points. Within the range of variation. Within the range of variation resulting in two different types of phenotypes. Resulting in two different types of phenotypes. अच्छा, मजे की बात बताऊं कि इनकी डेफिनेशन जहां तक मैंने देखा है पेपर्स में नहीं आई, लेकिन एक दफा उसने पास पेपर्स में आपसे ग्राफ्स ड्रॉ करवाए हुए हैं इस चीज के, यानी कि जनरल जो शेप है, यानी कि स्टेबलाइजिंग की बीच बीच में है, डायरेक्शनल की किसी एक डायरेक्शन में है, और डिसरप्टिव की बीच में है. आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीसेंट पेपर्स. मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था बहुत ज्यादा सेशन से पहले, मुझे मिला नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह. सो इफ यू लुक एट द अगेन, if you read the script at the bottom, it says graph C, which is the third graph, shows what would happen if the selection acted against smaller individuals but not larger. ये वाले ग्राफ की बात हो रही है of this one, directional selection. ठीक है. In case of the range of variation shifts towards the larger size, this type of selection, which results in a change in characteristic in a particular direction, is called directional selection. और disruptive का क्या मतलब है? बीच वाली स्टेटस को, जो बीच वाला जो बॉडी मास है, जो फीचर है, वो फेवर नहीं हो रहा बल्कि एक्सट्रीम्स फेवर हो रहे हैं. दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन. असल में नेचुरल सिलेक्शन में हम इन सारे सिलेक्शन प्रेशर्स की बात करते हैं, तो सिंस ये उस वक्त बीच में इनको एक्सप्लेन करने से बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. आई नो मैंने नेचुरल सिलेक्शन की एक बिगर चंक में से आपको ये पोर्शन एक्सप्लेन किया, इसलिए पोटेंशियली it may look confusing, but I hope you understand. It's basically a different ways in which natural selection happens. Either to one extreme, या फिर नहीं हो रहा, status quo रह रहा है, या फिर extremes select हो रहे हैं और बीच वाली चीज select नहीं हो रही. ठीक है बच्चों, कुछ clear होता है? Is there any ambiguity and confusion so far? No sir. Okay, good. चलें जी.
अब हम आते हैं the idea of what exactly is natural selection. पेपर में आपने उसको किस तरह लेके चलना है. Okay, that's basically what is important. यानी कि how do I explain natural selection and evolution, and what is the good choice of word that I have to use in order to make sure that I score all of the required marks. Okay, so and that's inshallah the last thing that we're doing for today. We still have 15 minutes of your time here. Chalo ji. So um, basically what we are writing is theory of evolution. Theory of evolution and natural selection. पास पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. तो हम बात एवोल्यूशन से शुरू करते हैं. सबसे पहले, और एवोल्यूशन का जनरली मतलब है दैट ऑर्गेनिजम्स दे चेंज ओवर टाइम. चेंज ओवर टाइम. ठीक है. अच्छा, अब नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कोई 12 या 13 किस्म के पॉइंट्स बताऊंगा. ठीक है. इन अ बर्ड्स आई व्यू मैंने आपको बेसिकली ये बताया है कि क्लास के शुरू में कि 3 लेयर्स हैं या 3 लेवल्स हैं इफ यू लाइक. शुरू हमने कल वेरिएशन से किया था. वेरिएशन होती है, फिर नेचुरल सिलेक्शन होती है, एंड इवेंचुअली वी हैव स्पीसिएशन व्हिच इज द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, that we're going to different species. No matter how absurd the idea is, but since it's in a syllabus, so we're looking at it anyhow. So organisms, they change over time. That is what evolution is defined as. अच्छा, फिर आपको याद होगा वो जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताए थे शुरू में जो उन्होंने डार्विन और वैलिस ने किए थे. सो the first thing that we need to mention about that is that organisms generally in an environment, in an area, they produce many offsprings. Many offsprings. ठीक है. इस चीज को कहा जाता है reproductive potential. That's a key word. ठीक है जी. They have a lot of high reproductive potential. अच्छा जी. और usually this is more than is necessary to maintain a population. ठीक है. यानी कि जिस तरह, यानी कि इन रियल क्या होता है, अगर एक आप रैबिट की एग्जांपल ले लें, रैबिट a pair has a potential to produce almost 500 offsprings for example, लेकिन प्रोड्यूस 2 ही हो रहे हैं, तो बाकी 498 किधर जा रहे हैं? They are basically dying off because of the competition and not having the better environment, better adaptations, and वो सारी चीजें, we'll talk about that just in a minute. So organisms generally, मैंने आपको बताया, they produce many large offsprings, more than it is necessary to maintain a population. So population size over time is constant. Population size. So population size is constant over time, over a period of time. ठीक है. अच्छा जी, ये तो होगी एक बात. तो okay, so I'm gonna just, for the sake of understanding, these 4 points are one context. Now we know, generally speaking, कि organisms जो हैं within species, within a species there is variation. क्या मतलब? There is variation, यानी कि किसी भी organism की बात ले लें, humans की ले लें, we are all humans but yet we're different. Okay, so within species there is variation. और variation जब मैं कह रहा हूं तो I basically mean variation in phenotypes, okay, which of course we know is due to, variation in phenotype is due to what? Genetic variation. ठीक है. It is due to genetic variation. और अगर आपको याद हो, genetic variation का जो main cause है, one of the causes is it is caused by mutation. ठीक है. तो ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन के एक्सप्लेनेशन का दूसरा पार्ट.
पहले पार्ट में आपने बता दिया जनरली स्पीकिंग, ये तो एवोल्यूशन की एक किस्म की आप समझें डेफिनेशन सी हो गई। फिर उसके बाद आपने बताया कि organisms they produce many offsprings more than necessary to maintain a population, so population size is constant over a period of time. फिर आप बताएं कि the second part is that within a species there is variation due to genetic variation which is caused by mutation. अब इसका consequence क्या होगा? अच्छा, ये ABC मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, otherwise you don't need to go into this. What happens is that individuals they compete for survival. Individuals compete for survival. क्या मतलब compete for survival? We need to qualify this with certain explanation. They compete for survival. Competition किसकी वजह से होता है? अब हमें पता है कि competition होता है because of selection pressures. और वो सिलेक्शन प्रेशर कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, वो वेदर हो सकता है, वो प्रिडेशन हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। और इस पॉइंट को अगर हम फर्दर इलेबोरेट करें तो उसको हम इस तरह करेंगे कि सम इंडिविजुअल, और दैट्स द क्रक्स ऑफ द पॉइंट, सम इंडिविजुअल्स आर बेटर adapted to the environment. कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मार्क स्कीम में मिल जाता है, लेकिन बहरहाल कैम्ब्रिज वाले खुद कहते हैं कि ये इज, यू शुड ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग दिस वर्ड। द बेटर चॉइस ऑफ वर्ड इज बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, ओके। या फिर आप ये लिख सकते हैं दे हैव एडवांटेजियस एलील्स, एडवांटेजियस एलील्स। या फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं दे हैव सेलेक्टिव एडवांटेज। लेकिन बहरहाल the first word better adapted to the environment is basically the word that you need. और अगर ये survive कर जाएंगे, अगर they are better adapted then they will survive, and of course if they survive they will reproduce, ठीक है जी। और अगर ये reproduce करेंगे they will pass on advantageous alleles to offsprings, ठीक है जी। और वो इवेंचुअली क्या करेगा, दैट विल चेंज द एलील फ्रीक्वेंसी। ये एलील फ्रीक्वेंसी क्या है ये इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि बेसिकली एलील्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर चेंजिंग, एंड दैट बेसिकली रिजल्ट्स इन व्हाट अकॉर्डिंग टू देम इज नोन एज स्पीशिएशन, व्हिच इज चेंज इन स्पीशीज, ठीक है जी। ये है जी आपके सारे पॉइंट्स जो कि बनते हैं नेचुरल सिलेक्शन की एक्सप्लेनेशन के। मैंने उसको 3 सब हेडिंग्स में आपके लिए ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना, आई यूजुअली डोंट से दिस बट यू हैव टू क्रैम ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन योर हेड, यू हैव टू मेमोराइज देम। और एग्जाम के अंदर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज हम कर लेते, लेकिन अब आज टाइम इतना नहीं है। इंशाल्लाह सो कल की क्लास में हम इसको आपको मैं बताता हूं कि इसके पास पेपर्स कैसे होंगे। इसके पास पेपर्स में आपको उन्होंने केस स्टडीज दिए होंगे कि जी एक ऑर्गेनिज्म थे, वो एक एनवायरनमेंट में थे, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, एंड दे इवॉल्व्ड, एक्सप्लेन how that evolution happened. So you will have to look at that case, look at the selection pressures, and look at all of that stuff and reproduce the same points जो मैंने आपको लिखवाए हैं according to the context of the question. तो इसके पास पेपर्स बहुत easy हैं solve करना। I mean the main crux मैंने आपको बता दी, ये एक skeletal answer है if you like, and you have to just redo that looking at the questions, ठीक है। तो ये है जी आपके सारे का सारा नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस। अगर आप बिल्कुल ऊपर आए तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 3 स्टेप्स हैं। वेरिएशन से हम शुरू हुए थे, फिर नेचुरल सिलेक्शन होती है विच इवेंचुअली लीड्स टू एवोल्यूशन, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके मैंने क्वेश्चंस कुछ पाइल अप किए हैं, वी विल डू दैट टुमारो, एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी वाइंडिंग अप दिस टॉपिक। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है इंशाल्लाह, दिस इज एन इजी टॉपिक। सो
inshallah we'll do some past papers for this topic tomorrow and we'll proceed with some next topics inshallah. हाँ जी, any questions that बच्चों you have for today? सर हमारे इसके बाद कितने चैप्टर्स रह गए हैं? 2 chapters है इसके बाद आपके. Okay, I know generally speaking ये topics जरा generally मैं आपको I mean honestly I will make a claim this is one of the most boring topics I ये बहुत बोर है, मुझे पढ़ाते भी बहुत बोरियत होती है और I don't know, I don't like this topic. ये वाला भी अगला थोड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत. ये असल में इसमें ना चीज़ें याद करनी पड़ती हैं और इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से होते हैं बहरहाल, लेकिन ये है कि it's easy to score. So I mean the reason that I don't enjoy this teaching this topic that much does not mean that you don't work hard on this. Okay, चलिए जी, जज़ाकल्लाह खैर बच्चों, inshallah see you tomorrow at 7. I'm leaving you 4 minutes early today. अपना बहुत ख्याल रखें. See you tomorrow same time 7 to 8. Assalamu alaikum.